meaning of this messaging. Okay, after that only this is kind of language. So both of these nodes should appear with that language, with that rule. That is my protocol. Any doubt is, समझ में आया किसी को? मीन्स कुछ कोई डाउट इस चीज में, इस पर्टिकुलर चीज में? व्हाट इज दिस प्रोटोकॉल? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी टर्म है। बेसिकली दो नोड हैं, वो कुछ भी काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए मेरे पास में कुछ रूल्स हैं। ओके, एंड दैट रूल इज माय प्रोटोकॉल। क्लियर गाइस? Okay. Okay, thank you. So next point is who define this protocol. Okay, here I have discussed like we have some rule and I have to define this rule, I have to set this rule. So next point is who define this protocol. So to define, I have certain entities, certain bodies, certain groups who is responsible to define. Okay, so for like 4G, 5G, this kind of, I have this particular group 3GPP. Okay, third generation partnership project. So this is responsible to define this protocol. Okay, and after that, is it company or any organization? What is that 3GPP? So it's guys kind of group. And who is part of this group? Some leading organization. Means this, if I take example of India only, okay, some leading organization means one, our Geo, Airtel, and after that Nokia, Samsung, Qualcomm, MediaTek, for example, okay. And apart from that, some leading universities, some research institutes, like suppose nowadays you have heard like IIT Kanpur and IIT Hyderabad is working on this 5G research. So these are again part of 3GPP. Okay, so like that, some leading companies, some organizations, some research organization, some leading universities. So these are part of this 3GPP, third generation partnership project. Okay, means these companies and universities and research institute come together to define these protocol. Okay, so that group is known as 3GPP, third generation partnership project. Okay, after that, nowadays this is kind of topic ORAN. So who define protocol related to ORAN? ORAN Alliance. This group, ORAN Alliance. Again, many companies part of this alliance, this group. After that, these again ITU, RFC, and IEEE. So these again some like for 3GPP2. 3GPP2 means our Wi-Fi kind of thing. So IEEE is responsible for that one. RFC is for IMS related thing. So, miss, in short, these are some bodies, some different bodies responsible for defining this, setting this protocol. Okay. This part I have covered. Who are members of this protocol? Like some senior representative of reputed organization like Nokia, Samsung, Geo, Qualcomm, TC. Okay. So this is like a overview. So nearly we can see in every roughly 10 years, we are getting one new technology, one new generation, like 1G to 3G, 2G, then 3G, 4G, then 5G. So roughly we can say nearly 10 years, we are getting new technology. Okay. And in every new technology, we have some requirement. To fulfill those requirements, we develop that upcoming technology accordingly. So if I talk about this one, 5G, nowadays we are working on 5G, means the latest technology we have in market. So high internet, high speed internet. In GBs we will get in GB. After that, machine to machine communication. To machine communication means that one. Our vehicle to vehicle communication we can say, or our smart homes, or means for example, like this, we are developing this self-driving vehicle. So how these vehicle will communicate with each other? Okay, so we are working on that one. V2X project we have. V2 means vehicle 2X. Okay, vehicle 2X. This type of technology on which we are working. So that is again part of 5G.
mean, this is kind of our requirement of 5G. And next one is my low latency, ultra level latency. With the level latency means I'm using that particular my use case in remote medical kind of scenarios. Means we can perform a surgery remotely. Means that kind of scenario we can do with the help of this latest technology. So same if I talk about 4G. So in 4G we'll get speed internet as compared to 3G and our cloud services, AP services. So with the help of 4G, we introduce again IMS. Anyhow, IMS is a old technology, but we implement this IMS with 4G. Okay. So that type of new things we are able to perform with this new technology. So roughly guys, you can understand in every technology, we get some new features. सर एक क्वेरी थी सर. Tell me. सर अभी आपने बताया कि IMS इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी. Yes. सर अभी करेंटली मतलब कि जो अभी हायरिंग चल रही है IMS और LT दोनों पे चल रही है, तो मतलब ये IMS टेम्पोररी हो रहा है कि वो मतलब कि वो भी ऐसे ही चलेगा जैसे. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कहा क्या है कि जो IMS ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी. मीन्स ये अभी जो आप कॉल कर रहे हो दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच वी कैन डू विद IMS. मीन्स IMS मैं अराउंड बात करूं तो 4-5 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका था IMS आपका. बट हमने अडॉप्ट कब किया है 4G के टाइम. इससे पहले हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए. बट ऐसा नहीं है कि IMS का कौन सा है. आपने जैसे 3G के टाइम पे देखा हो तो IMS जैसा कोई कॉन्सेप्ट है अडॉप्ट नहीं कर रखा था. ठीक है. दैट मीन्स नॉट दैट कि IMS था नहीं उस टाइम पे. ओके. मीन्स IMS था बट हमने अडॉप्ट कब किया है अपने सेल्युलर में 4G के टाइम पे. ठीक है. Anyhow, IMS is we can say kind of feature only. With the help means with this 4G or 5G, this type of technology, we are using IMS with the help of this technology. Okay. Okay. So this is my high level architecture of LT. So in that you can see this is just for your reference only. Like we have E node B, we have certain role of these nodes, like then HSS, PGW, HGW. So high level architecture is look like that only. Okay. If I compare that particular architecture, so in that architecture, where is my UE? Here. And that UE interact with E node B. This is my E node B. Okay. So if I compare that particular architecture with my protocol, so it will look like that. Okay. In that, these are my protocols, like NAS protocol, RRC, PDCP, RLC, NET, L1. L1 is my PHY. Okay, PHY protocol. So this is my layer 3. Layer 3 protocol, NAS and RRC. Okay. After that, PDCP, RLC, and L2. Sorry, MAC. This is my L2 protocol. And L1 is my PHY protocol. Okay. So we have different functionalities which we can do with the help of this protocol. Suppose initial LT attach. So NAS is responsible. Radio resource control for like data, user plane data related thing. These three layers are responsible for like resource management or not particularly controlling part, the user plane only. Okay. After that, my resource paying, CRC addition, this type of feature where I can do on L1. Okay. So means in short, I have these are our protocol, LT protocol, and with the help of this protocol, we can perform some specific tasks. Okay.
So yeah, one more thing. So basically, in general, we have two type of signaling. So two type of interaction. First one is our user plane. Second one is our control plane. Okay. So what is different between two type of signaling? Control plane signaling and user plane signaling. Control plane is basically whenever, for example, whenever I'm attaching with LTE network. Okay, attaching means just I have powered on my device and I'm accessing my network. So at that time, whatever I'm doing is my control plane signaling. Okay, but not user plane. Suppose I have attached with my network and now I'm accessing some YouTube or I'm downloading some movies, some song, anything. So that is my user plane signal. So accordingly, I have splitted my protocol stack, user plane, and control plane. Okay. Any doubt, guys? Anything to ask? Okay. So yes, these are some testing type of testing which we do in our day life as a protocol tester. So let's discuss one by one. So first one is testing differentiated based on layers. So these are suppose our layers means L1, L2, L3. Okay. So for example, some people are working on L3, some are working on L2, and some are working on L1. Okay. So we can differentiate. So profile wise, three profile we can have. Okay. Means we can have, it's not mandatory. Again, it depends organization to organization. We can differ. Okay. So based on this layer, we can differentiate our testing. Means layer one testing, layer two testing, layer three testing. After that, manual and automation testing. Okay. So let's understand that 2 point. So suppose I want to make a call to number 1, and how many times? Second iteration means how many times? Suppose 10 times. So in case of manual testing, I have to all the 10 times I have to open my mobile and I have to dial that number 123 by my own. Okay. Means in general, what we do, like we just open our Google dialer or any dialer, we just type 123 and press call button. Okay. Then only we are able to dial call. So in manual testing, we have to do the same thing 10 times. Okay. By our own. Then what is the difference in that testing automation? In automation, what we can do with the help of some scripting language, we can write a script. So in that case, we just have to put these two things, number and iteration. And with the help of that script, automatically the call will dial 10 times and show us the result. Okay. Means in that particular thing, manual testing, we have to do with our hand. In automation testing, with the help of some script, we can do. Means we don't have to perform this call all 10 time. Okay, manually. So that is basic difference between these two things. Okay. Next one, we have some different testing on based on node and layer. So let's discuss in short. So what is functional testing? Suppose I have this direct. This is my DUT. DUT, DUT means device under test. Whatever I'm testing, whatever product I'm testing, that is my DUT. Okay. Suppose I'm working at UE side. So UE side means my phone, my user equipment. So that will be my DUT. Suppose I'm working at
inode B side or for some inode making companies. Okay, so that time that inode B will be my DUT, means device under test. Okay, so in functional testing, suppose this is my DUT and I want to check functionality of this DUT. So this is, first one is my call. Second one, like before call. These are like for example only. Okay. Then throughput. Throughput means data throughput related cases. Throughput or some, suppose for example handover. So what I will do, functional testing, only 1 1 2 2 time I will just check the this functionality. Okay, and make pass these test cases. Okay, and that is my basically functionality check. Okay, so that is the thing I do in functionality testing. After that, conformance testing, this is like we have some predefined testing scenarios or some specs we have, this PP spec. So on based on those specs, we have some predefined test cases. So we just perform those test cases only. So that is my conformance testing. Okay. After that, performance testing. So in functionality check, suppose I have performed one time, one time, but in functionality check, sorry, in performance testing, what I will do, I just increase the number. Suppose 100 call. Okay. And at that time, I will check the time and failure ratio. Means suppose my threshold is 98%. My DUT should pass at least 98 calls from these 100 calls. Okay. After that, stability means stability and load is kind of same. Okay, means I will stress out DUT. I will perform number of test cases for long duration. Long duration is overnight kind of test cases. Means suppose data throughput or suppose in normal voice call. So I will connect a phone and for just leave that setup for overnight. Means after that I will observe next day like what is the behavior of my DUT for long run at the time of load run testing. These type of testing. So same we have different testing. Okay, and based on this testing we'll get different result. This one, so just does that one also. Testing in land field. So what do we mean with that one? That part is more about testing environment. Okay, we have some simulators. Okay, simulators. So suppose you have one inode B in real time. Real time means outside or like commercial inode B. So what you can do your testing with that inode B in field in any area. Suppose you want to check your handset with a geo sim. So come some nearby area of that geo inode B on your test cases and accordingly like you can check your functionalities. Okay, so that is my field testing. And what other thing I can do, I can simulate the same scenario. Means no need to come need to go anywhere in field. Suppose this is my lab, so I have one simulator. It's like it will behave like my inode B. Okay, and this is my UE. Okay, UE or my DUT. Okay, so this with the help of these simulators, I can check anything, any testing or any functionalities in lab only. Okay.
don't have to go anywhere in field or anything kind of thing. Any doubt, guys? Any concern, guys? No, sir. Okay. तो बेसिकली लोड करूं तो फील्ड टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? फील्ड टेस्टिंग में आप अपने डिवाइस को लेके फील्ड में चले गए, फील्ड में मीन्स आउटर साइड चले गए और वहां पे हमने कोई नोड भी सर्च किया, तो ये और उसके नियर बाय आपने मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर लिया, टेस्टिंग परफॉर्म कर ली। बट डिवाइस होता है, हार्डवेयर होता है, सिमुलेटर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के सिमुलेटर आते हैं, वो जस्ट आपका इनोड भी बिहेव करता है, ठीक है? तो उसके साथ में आप लैब में ही वो सेटअप क्रिएट कर सकते हो। सो देन व्हाई वी डू फील्ड टेस्टिंग, व्हाई वी कांट डू ओनली लैब टेस्टिंग? सो इसके लिए क्या है कि हम सिर्फ फील्ड टेस्टिंग ही, सॉरी टेस्टिंग ही क्यों नहीं कर सकते? मीन्स हमको कहीं इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसका क्या है कि सपोज फील्ड टेस्टिंग है तो उसमें सबसे पहले है कि आपको एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट मिलेगा। फिक्स्ड एनवायरनमेंट मीन्स कि आपके पैरामीटर्स हैं, नेटवर्क पैरामीटर्स हैं, मतलब आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उसमें, आपको इतनी फ्रीडम है सिमुलेटर के केस में, ठीक है? मतलब पीसीआई है, एंड है, बैंडविड्थ है, आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? बट वो आपका रियल टाइम एनवायरनमेंट नहीं है। मीन्स आपको रियल टाइम एज ए यूजर, क्या बोलते हैं, एंड केस में आपको फोन तो फील्ड में ही जाने में, आपका ड्यूटी है, जो आपका प्रोडक्ट है वो फील्ड में ही जाना है, तो वो एनवायरनमेंट आपको लैब में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेस्ट अवर ड्यूटी इन एज वेल। तो फील्ड में क्या होगा आपको कि एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा, जो नेटवर्क है फ्लक्चुएशन मिलेगी आपको उसमें, और क्या बोलते हैं ये इंटरफेरेंस वगैरह रियल टाइम मीन्स जो चैलेंजेस आएंगे आपके पास में, तो वो सब आपको फील्ड में ही फेस करने पड़ेंगे। तो आपको वो करना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है वो कैपेबल है क्या उन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए हम फील्ड में भी टेस्ट करते हैं और लैब में भी टेस्ट करते हैं। लैब में बस इतना है कि हमारे पास में फ्रीडम है कि हम जो मन हो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट गाइस इसमें? ठीक है, देन ये टूल्स हैं हमारे पास में कुछ जो हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। क्वालकॉम की एक्चुअली दीज आर लाइक गाइस प्रोप्राइटरी टूल। तो क्वालकॉम टूल स्पेसिफिक QSTM, QPST, QPAT, and like MediaTek use that ELT tool, and for majorly for NetB side of testing we use that Wireshark, that is open source tool, and we have this Jira. So Jira is kind of bug tracking and raising tool. Okay? कि जैसे सपोज करो आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो और आपको कुछ बग मिला, बग मीन्स कोई डिफेक्ट मिला, कुछ इशू मिला, तो वो आप किससे रेज करते हो? जीरा की हेल्प से रेज करते हो। कोई डाउट गाइस इसमें टेस्टिंग में कुछ और? एक डाउट है सर। ये जो आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, तो अगर ये QXDM और ELT यूज करें तो जो स्क्रिप्टिंग है, मतलब वो जो रिपीटेशन है, वो तो हम इसी में सेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग कहाँ यूज होती है एग्जैक्टली ये पूरे पिक्चर में? नहीं नहीं, स्क्रिप्टिंग पूरे पिक्चर में क्या है कि इटरेशन एक टेस्ट केस की कर सकते हो, कि कॉल की या फिर आपको ड्यूरेशन की, राइट? अब बट मुझे क्या करना है कि मुझे LT अटैच करना है, देन मुझे 10 कॉल करने हैं, देन मुझे थ्रूपुट भी चलाना है थोड़ी देर के लिए, देन मुझे हैंडओवर भी परफॉर्म करना है, समझे? तो इतने सब चीजें आप नहीं कर पाओगे। ओके, ये सब QXDM और ELT में इस तरह से हम नहीं चूज हाँ, कर इतने सकते। नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक इटरेशन हम चूज कर सकते हैं। ओके, क्या कर रहे, तो ये एक स्क्रिप्ट ही है जो कि हमने उस टूल में इम्प्लीमेंट कर रखी है। ओके, वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट ही है। तो वो आप जो स्क्रिप्टिंग बोल रहे हो उसके लिए फिर अलग सॉफ्टवेयर रहेंगे जो हाँ, अलग इसके साथ अटैच इन कर, जनरल। इसके दोनों शायद कंबाइन होके काम करेंगे, QXDM और हाँ DUT के साथ, मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो वो कौन से रहेंगे, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? लाइक टूल टूल जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती रहेगी। स्क्रिप्टिंग या पाइथन पर ही यूज होती है।
ओके ओके, बट उसके लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो रहेगी ना, लाइक उसमें करने, वो जैसे एक आपने ये कंपनी टू नाम दिया है। कंपनी है। वो ओके कंपनी टू कंपनी है कि कोई कंपनी कुछ टर्मिनल कर रही है, कोई कंपनी कस्टम यूज कर रही है। ओके ओके, ठीक है, वो थैंक यू। फिर स्पेसिफिक है। ओके, तो कोई एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो? जैसे क्वालकॉम कर रहा है, एक्सियम यूज कर रहा है, कुछ कुछ तो ओपन सोर्स पे भी कर लेते हैं, जैसे एनाकोंडा है पाइथन ओके का, उस पे स्पाइडर टर्मिनल है ना, ओके, उस आप पे। उसकी बात कर रहे हो, ठीक हाँ, है तो उस पे भी वो कर ले। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर पूछना ओनली फॉर पाइथन है कि और भी कोई लैंग्वेजेस मतलब इन सब क्या पाइथन भी है, पर्ल भी है, फिर कुछ स्क्रिप्टिंग में ये प्रोग्राम जो डेवलपमेंट का काम करते हैं सी शार्प में भी करते हैं। तो वो फिर यार प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पीएचपी है थोड़ा पाइथन सा। लगभग सिमिलर सिमिलर होता है। क्या क्या सर पीएचपी और पाइथन लगभग लगभग सिमिलर है क्या, दोनों लैंग्वेज? सबका इसमें किसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, वैसे जहां तक है ऑटोमेशन टीम अलग होती है जो कि इन सब पे। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल अगर बात बताऊं तो एज ए टेस्टर हमें क्या स्क्रिप्ट मिल जाती है, कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि उस रिक्वायरमेंट की स्क्रिप्ट वगैरह या फिर जो भी है हमारे पास में पहले से अवेलेबल नहीं है, तो वो एक डिफरेंट केस है। ठीक है। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। ये कुछ एक जनरल हमें करना पड़ता है, मीन्स ये हमें टेस्ट केसेस पास ही करने पड़ते लॉन्च करने से पहले। ठीक है, फिर स्प्रिंट एंड साइट, दीज टू कंपनीज making our simulator kind of thing, means either UE simulator or network simulator। ठीक है, तो फिर कुछ हमारे पास में डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे ओनली लॉग एनालिसिस की हमारे पास होती हैं, टूल डेवलपमेंट की होती हैं, आरएफ साइड पे भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, टेस्ट प्लान एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरिया में डिवाइड हो जाते हैं रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये कुछ मिथ्स हैं जिस पे अभी जस्ट लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, कि ओनली प्रोग्रामर कैन डू टेस्टिंग। सो टू अंडरस्टैंड वन मोर पार्ट, सपोज we want to develop a product. Okay, I'm giving this name again DOT. Okay, so we have two part. First one is my software plus my hardware. With the help of these two, I will make one device. Okay, सपोज आप विजुअलाइज करो कि आपका फोन है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर खुद है ही अपना बाहर वाला जो पार्ट है। ठीक है, इन दोनों से मिला के आपके पास एक डिवाइस बना है। ठीक है, अब हार्डवेयर को मैं पिक्चर में से हटा रहा हूँ कि एनी हाउ वी आर पार्ट ऑफ दिस साइड सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिस साइड सॉफ्टवेयर में दो टीम डिवाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट वन डेवलपमेंट डेव्स टीम, सेकंड वन टेस्टिंग टेस्टिंग टीम। ओके, तो इन दैट पार्ट डेवलपमेंट टीम ये एक बिल्ड बनाती है, बिल्ड मीन्स एक सॉफ्टवेयर बनाती है। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है और ये मेरा ड्यूटी हो गया। तो टेस्टिंग टीम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जो सॉफ्टवेयर है इसको टेस्ट करे कि इसमें कुछ इशू तो नहीं है ना, इसमें कोई बग तो नहीं है ना। बग मीन्स सपोज मैं को कॉल कर रहा था बट इस सॉफ्टवेयर में वो कॉल नहीं लग रहा, और इसका है
सॉफ्टवेयर का, सॉरी, वर्जन V1, ठीक है, वर्जन V1 है। V1 वर्जन में मेरा कॉल नहीं लग रहा, कॉल फॉर एग्जांपल नहीं लग रहा, तो आई विल रेज ए बग। बग किससे रेज करूंगा मैं? जीरा टूल से, जो भी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसमें मैं क्या दूंगा? इनिशियल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि मैंने ये टेस्ट केस परफॉर्म किया, ये स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज की, और इन स्टेप्स के साथ में इस मेरे पर्टिकुलर रन में मुझे ये बग मिला है, ये इशू मिला है, ठीक है, एक चीज। दूसरी, अब सॉफ्टवेयर टीम क्या काम करेगी? मुझे नेक्स्ट बग बिल्ड देगी, ठीक है। सपोज ये वर्जन V2 है, आपने देखा होगा मैं सॉफ्टवेयर में अपना एप्लीकेशन वर्जन होते हैं, मैं व्हाट्सएप के या फिर अपना फोन का भी जब अपडेट आया है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसमें भी कुछ वर्जन होते हैं। सपोज आप वर्जन कुछ वर्जन एक्स यूज कर रहे थे, तो उस एक्स डॉट समथिंग 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 कुछ वर्जन अपने पास में नेक्स्ट आ जाएगा, तो वो भी अभी ये बिल्ड ही है। बट क्या ना, वो हमारी हो गई पोस्ट रिलीज, मीन्स आपका डिवाइस है वो रिलीज हो चुका है, तो वो अपडेट आपको कैसे मिल रहा है? ओटा से देयर आ रहा है वो अपडेट, आप कहीं करवाने नहीं जा रहे उसको, ठीक है। तो वो ओवर देयर अपडेट आता है पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट था कि आप V2 रिलीज की, इसमें भी सपोज बग मिला मुझे, तो मैंने अगेन बग रेज किया, ठीक है। अब रिलीज आई V3, वर्जन 3। अब वर्जन 3 स्टेबल है, मीन्स इसमें मुझे कोई बग नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ये वाली, तो ये प्रोफाइल हो गई काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में, मीन्स दिस स्पेसिफिकली डेवलपमेंट में, ठीक है। बट हम जो प्रिपेयर करेंगे, हम जो बात करेंगे वो टेस्टिंग की करेंगे, तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री में कि प्रोग्रामर कैन डू टेस्टिंग, कि आपको C++ और ये सब चीजें आनी ही आनी चाहिए तभी आप टेस्टिंग में जा सकते, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड वन, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम, पाइथन, TTC और ये पर्ल वगैरह, ये मस्ट है टेस्टिंग के लिए। तो ऐसी भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि आपको इन सबकी मैंडेटरी ही होनी चाहिए, अगर आपको आती है दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू, दैट विल मेक सम एक्स्ट्रा पॉइंट इन योर CV इन योर प्रोफाइल, ओके। तो वो अदर है, अदर पार्ट है, बट कुछ नहीं है कि इनके बिना आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और ठीक है, वो JD में सब लिख देते हैं कि मतलब सब कुछ ही चाहिए उन्हें, सारी लेयर की नॉलेज चाहिए, सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी चाहिए, और भी कुछ रह गया हो तो वो भी वो सब डाल देते हैं JD में, बट प्रैक्टिकल ये सब पॉसिबल नहीं कि आपको सभी एक पूरा पार्ट आता हो, कि आप हर लेयर पे आप प्रो हैं और आपको क्या बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सब आती हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता इन जनरल, ठीक है। साइड बाय साइड आप सीख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो वो एक अलग चीज है। अगर आप ये बोलोगे किसी इंटरव्यूअर को कि भाई मुझे नहीं आती है या फिर मैं अवेयर हूँ, तो वो एक पॉइंट नहीं आपके लिए, वो ऐसे नहीं देखेगा कि भाई इसको नहीं आती है अभी टेस्टिंग कैसे करेगा, ठीक है। वैसे भी आपको वो स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी इन जनरल, ठीक है। अगर आप बोलते हो मुझे आती है तो ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है कि आपको आती है, इन केस कभी करनी पड़ती है या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप मिस कैपेबल हो उस चीज को समझने के लिए, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ठीक। इसमें इस केस में आफ्टर दैट इंटरव्यू इज टफ, कुछ लोग तो मीन्स प्रिपेयर करने से पहले ही ये परसेप्शन बना लेते हैं कि इंटरव्यू बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, सो वो फिर अगेन एक रॉन्ग मिथ ही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू टफ है। इंटरव्यू में सपोज करो आपके पास में कुछ टॉपिक्स हैं, मैं अब सिर्फ मैं बताता हूँ आपको कि सपोज ABC 3 टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो बंदा आपको इसमें डेप्थ में लेके जाएगा ही जाएगा, आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी पूरी अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो अपने कुछ घर से कुछ प्रोटोकॉल बना लेगा कि वो पूछ लेगा आपसे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको रफली मैं मिनिमम आइडिया दूं तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सपोज एक्सपीरियंस है इनटू 2, आपका पैकेज मार्केट में मिनिमम के डेट में, ठीक है। सपोज आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 10 के लिए आप एलिजिबल हो, उस पर वो आपसे नेगोशिएशन भी नहीं करेगा, ठीक है। सपोज 10 लाख वो अगर आपसे दे रहा है
तो इंटरव्यू में आपसे वो करेगा कि आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपकी थ्योरी में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर। ठीक है, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं कि अराउंड 150 क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिले? जो हम इंटरव्यू में पूछते हैं, फर्स्ट चीज। जो हमारे कलीग इंटरव्यू पूछते हैं, सेकंड चीज। और अब से पहले जितने भी बैच हमने कवर किए हैं, उसमें से जो भी कॉमन क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है, जो आपसे पहले किसी ने फेस किए होंगे, वो हमने एक जगह ड्राफ्ट कर रखे। ठीक है, जो कि कोर्स के बाद में या फिर मतलब टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी कोर्स के बाद में थोड़ा सा इजी रहता है कि सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो वो थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट, बस 1 सेकेंड। ओके, सॉरी गाइस। सो तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि सेक्टर में है। ठीक है, तो इसमें से कैसे डिवाइड करते हैं? कुछ हमारे पास में, आई एम ऑडिबल ना? ओके, थैंक यू। सो कुछ हमारे पास में चिपसेट मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, लाइक Qualcomm, Intel, Broadcom, MediaTek. Okay. After that, we have some RAN vendors. These companies are working at RAN side, especially Node side, like Samsung, Huawei, ZTE, Ace Antenna, ASCAN, Sterlite, Parallels, Mavinet. And these are some of the companies. Okay, not all companies I have mentioned here. After some companies at like equipment manufacturer like Expo, Sterlite again, some operators, means all operators are working in the field, but these are some operators. These three are Indian operator, Jio, Airtel, Vodafone, Idea, and these two, like this is a US operator, and Rakuten is Japanese operator. Okay, but these are such service-based company like Ultron, L&T, Mind Touring, Mobilium, TCS, Infosys, Span Idea. Okay, so what is the difference between these two? Service-based company and any other product-based company. Okay, service based means these company will hire you. They will deploy you some product based company. Means suppose you are working with Ultron, means hired by Ultron, but they will deploy you at MediaTek or Qualcomm or Intel anywhere. Okay, so we have lot of vacancies in this company, service based company. Okay, काफी सारी कंपनीज हैं आजकल, और ये और एन आने से क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज इज लाइक एसेंचर और दिस वन
मीन्स मैनी मोर कंपनीज भी हैव लाइक इन सॉफ्टवेयर डोमेन एज वेल। सो उनका भी काफी इन्वेस्टमेंट है आजकल इसमें टेलीकॉम में। सो काफी अभी वैकेंसीज अगर एक्टिव हो इस पे लिंक्डइन पे तो आप सब देख रहे होंगे कितनी वैकेंसी चल रही है मार्केट में फिलहाल की डेट में। तो ये हायरिंग फ्रंट है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कंपनीज अभी फिलहाल वर्किंग है इस फील्ड में। ठीक है, ठीक है। तो बिफोर दैट वन let me show you this content. If okay, this is just for overview. So course content wise we'll cover LT basic, means we will start with LT basic. In LT basic we'll cover like what is protocol, what type of protocol we have, okay, testing, what all type of testing we have, after that frame structure, OFDMA, these type of thing we'll cover in LT basic session. Okay, after that we'll start with specific layer, like all the functionality of this one our layer wise, like for example file layer, PDCCH and processing, PCFICH processing, like what is the working of this channel and what is the processing of this channel. After that MIMO concept. MIMO is one of the most important topic of LT. Okay, so we'll go through this topic. We'll go antenna diversity, antenna multiplexing, these thing will cover. And like for example like this one mac will cover mac functionalities like rach har phr bsr sr, these are mac functionalities. Okay, so these thing will cover when we see this mac layer. The same, these are like just for your reference only. The same in every layer will cover functionalities of every layer and what the role of these functionality and impact of each and every parameter. So these things will cover. Okay, that like practical session will have. In practical session what we will cover: test case planning and test case execution, means how we plan the test case, what should our approach while writing a test case, how we write a test case with respect to any scenario. Okay, suppose for example इनिशियल अटैच है, ठीक है, तो उसका भी एक टेस्ट केस डिजाइन कैसे करोगे आप, ठीक है, कोई भी एक फंक्शनैलिटी टेस्ट केस कैसे लिखोगे। अब टेस्ट केस बनने के बाद में उसको परफॉर्म कैसे करोगे, सेटअप कैसा रहेगा उसमें, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट लॉग एनालिसिस के लिए हमारे पास में टूल हैं QXTM एंड QPST एंड आई थिंक एक्सकेल भी आगे है आजकल हमारे पास में, ठीक है। तो ये 2-3 टूल हम यूज करेंगे एनालिसिस के लिए कि जो भी हम कॉल फॉर पढ़ेंगे, जो भी हम फंक्शनलिटी पढ़ेंगे वो टूल में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल सेशन तो कुछ लिमिटेड ही कर सकते क्योंकि बेसिकली प्रोप्राइटरी टूल है, ठीक है। सो जैसे सपोज लॉग प्रिंट्स हैं, सो वो में कैसे दिखते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सही रहेगा, ठीक है। तो बोनस से डिस्कशन किया था जैसा कि हमने कुछ 150 इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम दैट CV प्रिपरेशन में। और उसके बाद में मिनिमम 2 इंटरव्यू में आपके कोर्स के बाद में हम ट्राई करेंगे, कमिट कर सकते हैं 2 इंटरव्यू के लिए मिनिमम। मैक्सिमम तो वो डिपेंड्स है कि वैकेंसीज रहेगी तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे जितना ज्यादा इंटरव्यू आपको प्रोवाइड करा सकें, बट मिनिमम 2 हम अपने रेफरेंस से आपको शेड्यूल करा कर देंगे इंटरव्यू। ओके, ठीक है। तो मीन्स इंटरव्यू शेड्यूल करा कर देने का मीन्स कि अब जैसे जो भी हमारे रेफरेंस है, चाहे खुद का रेफरेंस फिर पुराने किसी स्टूडेंट का, कलीग का, तो वो हम यूज करके आपके 2 इंटरव्यू मीन्स आपका शेड्यूल करा के दे सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ये रियल टाइम इंटरव्यू विद इंडस्ट्री, और इससे पहले कुछ जो भी डेमो इंटरव्यूज हैं वो हम आपके लेंगे। बस कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल कराने से पहले हम आपके डेमो इंटरव्यू लेंगे कि आपकी प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक मिल जाएगा, है ना। तो आप उस डायरेक्शन में प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपका वीक एरिया है उस डायरेक्शन में आप और आपके एफर्ट है वो डाल सकते हैं, ठीक है। सो ओरेन, सो दिस let me first complete this one.
So polo wise, like LT power on, in power on what we will cover, like frequency scheme, frequency acquisition, system information acquisition, H, RRC connection setup, attach procedure, and after that bearer establishment and CSRB handover salary selection and INC registration type of scenarios, those things will cover. Okay. In 5G, from like LT, in 5G, what will cover? 5G overview, requirement of 5G, network architecture, channel mapping, and 5G interworking. And we have some different deployment options to NSA and SA. Those we will discuss, and 5G NSA flow and SA procedures. So these things will cover in 5G overview sessions. Okay. We are covering PDCP layer or not? No, all All layer. yeah, all layer will cover. L1, L2, L3, all layer will cover. Okay. So like introduction with ORAN, introduction with 5G, and LTMS. These are like separate things what we will cover apart from LT testing. So major course is like based on LT testing, and apart from this LT testing, we will cover ORAN, 5G, and LTMS. Okay. So any doubt, guys? So it means anything to understand or any doubt, any concern with respect to like field, means what is the protocol testing field or vacancies or preparation, syllabus, anything you can discuss if you have any doubt. You alone conduct the batch or you have a team? Like What? like you are individually take this course whole No, course or you have a team like? we have team, but like for LT and some part of 5G, I will initially you guys will interact with me only. So how many people are you? Yeah, 5, 6 people we have. And how like how many people in one batch? One batch that depends on like suppose equal experience and equal background. Accordingly, we divide into the batch. So it depends on like how many stations we have. So in general, 10, 12, or 13 people in a batch. Thank you. Yes, and you can discuss. Means if you have any doubt in that particular session, means anytime you can discuss. Yes. So for registration process or for any other update, you can discuss on this number. You connect with us on this number. Okay.